I think we can probably get started. Namaskar, everyone. Thank you for joining after, busy work days, I'm sure for most of you. Um, so thank you for joining, a quick session to remember our Kashmiri and Indian martyrs. I think Sudhir Rana, Uncle, our president, has a few words that he'd like to say. Followed by a quick 2-minute silence just to pay our respects. Thank you, Sheen. Namaskar, Sadni. आज 14 सितंबर 14 सितंबर कश्मीरी पंडित मार्टियर्स डे यवान मनावनो सानिन शहीदन हुंद दो इंडियास मंज 14 सितंबर हिंदी दिवस यवान मनावनो यह ऑस्ट्रेलियास मंज आर यू ओके डे यवान मनावनो तो इन समरी यह सठा अहम दो तो सानिस कल्चरस हंद खतर ज्यादा अहम बह कर थोड़ा बहुत कत 14 सितंबर क्या सान खतर अहम तथ रीजन ये कि 14 सितंबर दित सन गोडनिक शहीदन शहादत यथ नविस दौरस मज नव दौर बह वनान सह दौर करान कंसिडर 1989 पत तम ब्रो अत वत पे पकमित मगर अमे दह 14 सितंबर यम दह गोडनुक सोन शहीद अत वत पे पोक 14 September Balidaan Diwas. In the shadow of our martyrs' sacrifice, we find the strength to stand tall and the inspiration to carry their legacy forward, non-violently. Bosus Katkaran Pandit Tikalal Teklusens, imo 14 September 1989 shahadat dits. Bosus tum to Kashiri manzis. Yos न जरा साथे एहसास गसान या फील गसान कि सडनली गसन हालात ई चेंज मगर सु दौर ओस बड़ अपहीवल ट्रेजेडी हुन दौर एनीवे टिकलाल टपलू जे सिंह गोनिक शहीद युंद मार्टियम डे 14 सितंबर मनाउन The first Kashmiri Pandit victim is में कात कर पंडित टिकालाल टपलू subsequently there were many other victims and martyrs too. The height of this tragedy is that the murders of Kashmiri Pandit victims were never investigated. The leaders who laid down their lives, their murders were never investigated. There is no other example in the world where the consequent governments chose to ignore these killings as if they never happened. The Supreme Court of India has refused to hear our pleas for justice, and they have not yet opened their doors to our pleas. Justice is still awaited. But the spirit that we have, we will never give up. We will remember our martyrs for times immemorial. I talked about Pandit Tikalal Taplu, Pandit Sarvanand Kaul, Pandit Premnath Bhatt, Neelkant Ganju, and number of those martyrs. We should keep in mind that these were ordinary intellectuals of a society who just carried on their business for the betterment of the community. No other ambitions, no other, just the business of looking after their community and just doing the right thing. And that's what made them our leaders. Intellectuals, social reformers, people who believe in community service, people who believe in community. And on this day, the 14th of September, we will remember them for times to come. On this solemn day, we remember and honor the brave Kashmiri Pandit martyrs, whose sacrifices are etched in the annals of our history. September 14th stands as a poignant reminder of their unwavering courage and resilience in the face of adversity. In the face of unimaginable hardship
and persecution, these valiant souls never wavered in their commitment to their culture, heritage, and the homeland. Their sacrifices serve as a beacon of hope and a testament to the indomitable spirit of the Kashmiri Pandit community. Today we bow our heads in gratitude to these heroes who laid down their lives for the preservation of their identity and culture. Their memory lives on in our hearts, inspiring us to stand strong, united, and committed to ensuring their legacy remains undiminished. On this day, let's renew our pledge to never forget the sacrifices of the Kashmiri Pandit martyrs and to work forwards towards a future where peace, harmony, and justice prevail in the beautiful land that we called home. Let's, for a sec, for 2 minutes, remember our martyrs in pure silence. Shukriya Sarni Hundimo has joined Kur as Idoh Manavnas Mans. Ummid kara ki going forward करो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट ये थोड़ा ज़्यादा sensitivity सहित मनाने खातिर अथ सहित अगर if anyone from the community wants to just share their thoughts or experiences, I think that would be perfectly in order. Thank you. If you just want to put your hand up or just start speaking, that's fine too. I think there's no hand up. Sheen, is there any hand up? So if somebody puts his hand up, we can definitely take that on. So I'll share my experience from 14th September to the 19th of January. Kashirians kya hal is. The chaos was youth ki kansi was samajh mein yiwan kya because you was tipert ye sorry yus program was yus amud bad planning san chalawn. Ödes vanan henna ठीक गए मे छु हुम गुरुजन वोनमुत ना सोरे गए ठीक ही चुत वुकनस ग्रोथ खराब
अड़ी वन नसा चलो इमीडिएटली चलो ये मारन नत सारे जनान क्यों मर्द तो पत गौ ती मोन अंकल जी यंग नौकरी मज लगित तो तम मकान बनावान बनावान तो वन स्टेज तम क्या स्लैब त्रावन तो कम मतलब रिश्तेदारों वन क्या करान तुम तमो वन तौर यह किस्मत आस तो बे वन गुरु जी नाव हतुक वन तमो वोनमुत कि ना तुम आशीर्वाद तो सोरे ग ठीक तो बहरहाल तमो बनो मकान तो पत obviously no, everybody knows तथ क्या हाल आस गोमुत 19th जनवरी रात बह पान पन्निस मकानस मज हदर पोर युथु यह सोरे यह तूफान आव रात 9:20 शाम तो युथु सडनली दर खूज तो सडनली आई आवाज मस्जिद मज सोरे एनीवे तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बह मेन मदद बेन फादर कोर मे एडवाइस कि त्रो मकान पन यल सोरे तो कोर बैक यार्ड फेंस सह जंप कर रूद अकिस तथ खाली प्लॉट तथ मज श्रब्स तथ तिमन श्रब्सन मज रूद खटित सुबनस इत कालस गाश आव तो अत दौरान वुच सोरे नारेबाजी कह नार तमो मज बड़ मशहूर क्या नटोरियस तिम नार तिम लगे तमो इत पे कड़ रात तो सुबनस यु गाश आव तो बह द्रास तम तो सो मेन स्टोरी इन द मीन टाइम अगर कंस बे पन ख्याल या कह वन वचान वन तो प्लीज अदरवाइज आई थिंक वी कैन स्टॉप इट I think there's a hand up, Uncle. अच्छा प्लीज गो अहेड Sudhir ji, मे पन जो इंस्टेंसेस याद बोसुस लॉकटी तिमन दोन एंड बोसुस पन्निस मतलब माता मालस मस तत आउट हाउस तो तत रोजाना किरायेदार सह तशर बटे बट आई थिंक सह CBIS मज करान तो ऑब्वियसली मोन लॉकट ब्रदर तो तम वो तमिस स्कूटर यु तमिस नबर नेरन दोपनस दरवाज का यथ कर थप सो दैट इट हैड अ स्प्रिंग काइंड ऑफ अ थिंग तो मोन लॉकट ब्रदर he would have been hardly what maybe I don't know 8-9 साल का होता वो तो तम कोरमिस खुलो दरवाज तो ही दिस CBI डायरेक्टर जो था ये आगे चला गया करण नगर गोल मार्केट के आसपास की बात है ये तो तम खुलो तमिस दरवाज तो सुधराव पे शुरिस टेंडेंसी वुचान योतान द पर्सन इज आउट ऑफ साइट तो वहां से 3-4 लोग आए फेरनस मज तो दे शॉट डाउन इन्होंने मार दिया CBI डायरेक्टर को तो अब सारी द्राई नेबर तो अब माई जो मेरा छोटा भाई था ही वाज काइंड ऑफ अ विटनेस टू सच ग्रूसम मर्डर तो मेरे नाना जी ने जैसे तैसे मेरा छोटा भाई को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ तो कम से कम 5-6 दिन पत उसको कमरे में बंद करके रखा सो वहां पे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट ओस में था कि हाउ इट विल इम्पैक्ट द चाइल्ड्स ट्रॉमा एंड ऑल दैट बट मेरे नाना जी ने 6-7 दिन मेरे छोटे भाई को मतलब जितने दिन कमरा से नेबर नियर नहीं तो इट वाज वेरी वेरी स्केरी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एक तो ये था इंस्टेंस दूसरा इंस्टेंस मेरे को याद है मैं मोन अंकल बोर्ड अंकल मोन कजन ब्रदर द्राई एस दो थोड़ा कालस खतर नियरो जोम माय पेरेंट्स स्टेट बैक तो टेम्परेरी थिंग थोड़ा कालस द्राई मैं तुझ पन ग्रामर बुक अंग्रेज ग्रामर बुक आरल बसूर तुझ पान एंड देन यु क्लॉक टावर इस उमरा कदल वत तत गई फायरिंग शुरू जबरदस्त क्रॉस फायरिंग चारों ओर से सो वी डिड नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग तो जैसे तैसे somehow we were pushed into the bus जिसमें हमको जाना था तथ बस मज वो ड्राइवर दोपन सारी करू lie down because the bullet can come from anywhere so mission पथई बोसुस पथर कन पथ कन ब्याख नफर we all of us were just flat on the floor
तो जैसे तैसे गाड़ी निकल गई आगे, पता नहीं कहाँ पे गाड़ी फिर रुकी। तो बहुत सारे वहां पे एक आदमी देखा मैंने, विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। एल्डरली पर्सन वाज, ही मस्ट हैव बीन 70-75 एल्डरली। तो ही वाज क्राइंग बिटरली, मतलब सोच अपने हाथ से वो सर पे मार रहा था। तो फिर बाद में पूछा आप लोगों ने क्या हुआ एंड ऑल दैट। दुपने मेरू सूटकेस प्रीति तात जाए ये थी फायरिंग गए। मेरे सूटकेस में मेरी पूरी बेटी की शादी का सोना, मेरे 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 सर्टिफिकेट्स, सारी ओरिजिनल्स, दे लेफ्ट वहीं पे गिर गया सारा। एंड he was just tearing apart his clothes and banging his head. So it was such a traumatic experience to go through. तो most of us went through this. हमारी कम्युनिटी के जो ये वुंड्स हैं, ये कमाल हमारे डीएनए का है कि हमने ये इंटरनलाइज किया और we didn't walk this path of violence. Whether other communities हैं दुनिया में जिन्होंने इससे बहुत कम ट्रॉमा से हथियार उठाए या बाकी चीजें की, we should commend our DNA. इसको चाहे आप जैसे भी देख लें, हमेशा हमने पॉजिटिवली फॉरवर्ड थिंकिंग, but at the same time we did not forget, we have not forgotten and we should not forget. वही आज का मैसेज है। तो अगर इसके सिवा कोई नहीं है शीन, तो we can close the session और सबका शुक्रिया करके let's sign off. Thank you. Thank you everyone for joining. Namaskar. Namaskar. Thank you. Thank you, Sudhir ji. Thank you. Bye.